Very good morning to all the students. Assalamu alaikum and namaste to all of you. Dear students, today we are going to cover some exercises of a Mohenjo-daro lesson which is still remaining in this lesson, and this is the third video lecture and we are going to finish today this lesson. So let's start now. These are the objectives to cover in this lecture. Number first, a student will have to compose the paragraph from the given topics. Student के ब टॉपिक ॾिनल आहिनि उन्हनि मां हिकिड़े ते पैराग्राफ लिखणो आहे मोर देन 5 to 7 sentences जो हुजनि. Number second objective, student will learn about the study of structures in rearrangement of the sentences. ॿी जेकी आउटकम आहे हुनमें स्टूडेंट जेके न स्टडी स्ट्रक्चर्स जे बारे में पढ़ंदा, यानी कि कुछ वर्ड्स आहिनि जंहिंखे जस्ट सेंटेंस में कीअं यूज़ कबो आहे उहो ईअं सिखंदासीं. एंड जंबल ॿिया सेंटेंसिस हूंदा, यानी कि सेंटेंस इनकरेक्ट ऑर्डर में हूंदा, उनखे असां करेक्ट फॉर्म में लिखंदासीं. नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल लर्न फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स एंड नॉन टेक्सुअल एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स जेके वर्ड ॾिनल हूंदा उनखे पुट कंदासीं ऐं उन खां बाद में जेके नॉन टेक्सुअल यानी कि रिलेटेड जेको टेक्स्ट खां रिलेटेड न हूंदी एक्सरसाइज उन जे बारे में सिखंदासीं. दीज आर दी 3 things टू कवर इन दिस वीडियो लेक्चर. And we had already defined very in the detail talk about the Mohenjo-daro and about the documentary which was given in the text. जेको कुछ टेक्स्ट में ॾिनल हुयो उन जे बारे में असां पढ़ियो हुयोसीं, that what was the reason behind the ruin of Mohenjo-daro and how the people they came to know about the history of the Mohenjo-daro with the help of the Sir John Marshall are the some things which were found over there. So let's start now. I told you about the 2 topics and these are the 2 topics. You need to choose one of them and you need to start composing a paragraph at least 5 sentences. Write in 5 sentences what you know from the ruin of Mohenjo-daro. मोहनजोदड़ो जे बारे में तव्हां छा ॼाणो था उन जे बारे में, यानी कि एटलीस्ट 5 sentences ॿुधायो जेको उनजो तबाही जो कारण हुयो. यानी कि Number second sentence, describe your village or your streets in 5 sentences. You may use the following words. Streets wide, narrow, clear, dirty, long. Lights are light, old, new, live, houses, small, most of, a lot of, entered in, buildings, shops. These are the words. You can compose the second one paragraph with the help of using these words, but you need to choose your village or your streets. या ॿई यानी कि टॉपिक ॿिन्हिनि मां कोई बि हिकिड़ो चूज़ करे सघे थो. इट मीन्स यू हैव 3 topics in two main headings. ॿिनि टॉपिक में तव्हां वटि 3 टॉपिक अची विया. यू कैन कंपोज एनी वन ऑफ दीज टॉपिक्स. नाउ वी हैव टू स्टडी and we have to learn the study of the structures, that how we use it in the daily basis. On the daily basis, these words, few words, a few people live there today, but about 4,500 years ago it was a large busy city. In this sentence you can see that a few is showing the number of people. It means it is an adjective. यो सेंटेंस में एडजेक्टिव तौर ते यूज़ थियल आहे. फ्यू एंड अ फ्यू में जेकॾहिं क्वांटिटी जी ॻाल्हि कयूं, फ्यू जेको आहे क्वांटिटी में ज़्यादा हूंदो आहे कंहिं खां अ फ्यू खां. यू आर सैड बिकॉज यू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स. इन दिस सेंटेंस तव्हां उदास आहियो छाकाणि त तव्हांखे कुझु ई दोस्त आहिनि. फ्यू मतलब कुछ, अ फ्यू मतलब कुछ ई, यानी कि अ फ्यू जी जेकी क्वांटिटी जेको आहे फ्यू खां लेस थींदी. नंबर थर्ड एग्जांपल, आई हैव अ फ्यू बिस्किट्स हियर इफ़ यू वुड लाइक टू देम. जेकॾहिं तूं उनखे वठणु पसंदि करीं. इन दी एग्जांपल नंबर 4, ही इज़ टेकन अ फ्यू लेसन्स इन इंग्लिश. हिन इंग्लिश में कुछ ई लेसन वरिता आहिनि, कुछ ई लेसन वरिता आहिनि. कुछ जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, कुछ ई जी ॻाल्हि कयूं
त कुछ जेको आहे कुछ ई खां यानी कि उनजी क्वांटिटी जेकी आहे ज़्यादा थींदी एंड यू कैन यूज़ दीज यानी कि एडजेक्टिव्स तव्हां यूज़ करे सघो था not many another word you need to use in the study of the structures that how you use it in your daily language. Not many boys have got this sum right. Again you can see that not many is used in the sentence and it is used before the noun and most of the word which used before the noun and those word qualify the noun that is understand or the understood as an adjective in the sentence. Not many is preferable to few in this sense. Again not many is used in the sentence as a noun यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ थियल आहे उन खां पोइ इन खे नॉट मैनी खे जेको आहे उन खां पोइ यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ थियल आहे ऐं जॾहिं हेल्पिंग वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम तॾहिं यूज़ थींदो आहे जेकॾहिं पाण वटि कोई बि प्रोनाउन हुजे या नाउन हुजे इट मीन्स दैट इट कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. एंड नंबर थर्ड हाउ मेनी एग्जाम्पल how many boys are in the class में केतिरा छोकिरा आहिनि. how many ask the number of the people it means it is used in interrogative adjective तौर ते sentence में यूज़ थियल आहे. how many boys are in the class. how many people are there यानी कि उते केतिरा माण्हू आहिनि. it again shows the number of the people. Nobody, nothing and no. Nobody knew anything about it. Past simple sentence है कोई भी माण्हू इन जे बारे में ना ॼाणियो कंहिं खे बि इन जे बारे में ख़बर ना हुई. Nobody went to see him in the hospital. को बि माण्हू इन खे हॉस्पिटल में ॾिसण ना वियो. And you need to put here the full stop at the end of the sentence. No one lives in this house. को बि माण्हू इन घर में या को बि इन घर में नथो रहे. को बि मां मुराद आहे त को बि माण्हू इन घर में नथो रहे. ऐं नो खां बाद में नो वन बि इन सेंटेंस खे यूज़ करे सघो था. नो वन और नो वन हेल्प्ड हिम कंहिं बि इन जी मदद न कई. अगेन नथिंग. नंबर थर्ड I can see nothing through the window. मां विंडो का कुछ भी शइ न ॾिसी सघां थो. There is nothing in the glass में कुछ भी ना है. a lot of या a lot बई सेंटेंस यानी कि you have a choice to use such structure in both sense. ॿिन्हिनि सेंस में यूज़ करे सघो था. Sir John Marshall knew a lot about old things. a lot means घणो कुछ. a lot about the things में मुराद आहे हिते जेको आहे a lot जेको यूज़ थियल आहे काउंटेबल शयुनि जे लाइ यूज़ थियल आहे. he knows a lot about birds who यानी कि काफ़ी परिंदनि जे बारे में ॼाणे थो. there is a lot of water in this jug. again water is an uncountable thing, that's why you need to use a lot of. what a lot of mangoes are on the tree. here the symbol is a exclamation symbol. केॾा न वण ते यानी कि अंब आहिनि. the word is made of या made up भी word यूज़ करे सघो था. example each house was made of large burnt bricks. हर एक घर वॾनि ऐं पकियुनि सिरनि जो ठहियल हुयो. the table is made of wood. this shirt is made of cotton. ही शर्ट कपा जी ठहियल आहे या ॾोरे जी धागे जी ठहियल आहे. a very much या very much. you can imagine how very much surprised and excited people were. this sentence is given as I has written in this slide. जी sentence I think let me verify from the book. verify karan di book ma whether I put the sentence in a correct order or not.
Okay, example number first. You can imagine how very much surprised and excited the people were, same as it as I had written in in the slide. In the second one sentence, you can see the use of the very much. He loves his wife very much. You know the meaning of this sentence. Not very much. I am not very much fond of movies. मां फिल्मनि जो ज़्यादा शौकीन ना आहियां. I don't like mangoes very much. मां अंब खे ज़्यादा पसंदि न कंदो आहियां. Very much means ज़्यादा घणो. Not at all. कॾहिं बि न. She does not speak English at all. हू इंग्लिश कॾहिं बि न ॻाल्हाईंदी आहे या ॻाल्हाए थी. हू कॾहिं बि इंग्लिश न ॻाल्हाईंदी आहे. रिपीटेड एक्शन इन अ प्रेज़ेंट सिंपल. वेरी वेल तमामु सुठो. शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. यूज़ ऑफ वेरी वेल. आई कैन सिंग दिस सॉन्ग वेरी वेल. मां इन सॉन्ग खे सुठे नमूने ॻाए सघंदो. नॉट वेरी वेल. हिते वेरी वेल हिन में सेंटेंस में ई में आहे. नॉट वेरी वेल. ही डिड नॉट रिमेंबर द पोम वेरी वेल. हिनी नज़म खे सुठे नमूने यादि न कयो. शी सिंग्स बट नॉट वेरी वेल. हू ॻाए थी बल्कि सुठी तरह न. मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, सम ऑफ. दीज आर द वर्ड. These words may be understood in the sentence as an adjective. Some of the words, कुछ जेके वर्ड आहिनि इन्हनि खे एज adjective तौर ते बि यूज़ कयो वेंदो आहे. कुछ खे यानी कि प्रोनाउन तौर ते बि इस्तेमालु करे सघूं. You can still see the great hall where most of the grain was stored. यानी कि उते तव्हां अञा बि कुझु वॾा हाल ॾिसी सघो था जिते दाणा जमा कया वेंदा हुआ. यानी कि this sentence was taken from the Mohenjo-daro lesson. Most of us are from villages around the school. यानी कि इन स्कूल में असां मां काफ़ी माण्हू जेके न ॻोठनि मां आहिनि. You need to put here other full stop. Many of the bird objects had pictures on them. यानी कि काफ़ी तव्हां जे मथां तस्वीरूं हुयूं. This sentence is also chosen from the Mohenjo-daro lesson. Some of the villagers took the pieces of old pots to Sir John Marshall. This sentence again, some of the villagers, you know that use of the same words. Let me tell you another thing. Some of us, many of us, and most of us, these words understood as pronoun in these sentences. इन sentences में इन्हनि खे pronoun तौर ते इस्तेमाल कयो वियो आहे. Salim and Karim have done the exercises. They may sit down. The rest of the students will keep standing. Karim ऐं सलीम जेको आहे एक्सरसाइज़ूं कयूं आहिनि उहे वेही सघनि था. बाक़ी जेके स्टूडेंट उथी बीहंदा. Perhaps you can answer some of my question. शायद ही तव्हां मुझे कुछ सवालनि जा जवाब ॾेई सघो था. Use of the some of. Into, out of. Into is you know that it is the preposition and it is used when something is inside and it must be in the motion. जेकॾहिं यानी कि into उते पाण वर्ड यूज़ कंदा आहियूं जिते पाण का शइ किथे रखूं ऐं बॉडी जेकी मोशन में हुजे. सपोजली माय फोन इज़ into my pocket. My phone is into my pocket. My pocket means when I will move and phone will also move with me. That's why we use into. यानी कि motion position में हुजे. They pulled him out of the water. उन्हनि हिन खे पाणी खां ॿाहिरि कढियो. Pulled means छिके कढणु या ॿाहिरि कढियो. He fell into the well. हू पाणी में किरी पियो. Well जो पाणी जेको आहे you know that it's also move. इहो बि मूव कंदो आहे. Exercises. Exercises हाणे कुझु कहिड़ियूं आहिनि. Frame sentences using few
with the following verbs. इन्हनि verbs खां तव्हांखे जेको आहे few word use करणो आहे. New or no, sing, write, take, go. You need to use a few words with these words. इन्हनि वर्डनि खां तव्हांखे use करणो आहे. Frame 5 sentences using a few with the following nouns. इन्हनि खां nouns खां जेको आहे तव्हांखे word a few use करणो आहे. In the third number instruction, complete the following sentences choosing appropriate phrase from the given list. Given list हिनी के fill in the blanks करना. I told you in very earlier before start our lecture that you must have given some words that you need to put those words in the fill in the blanks in the correct order. So let's start now. The first one I'm going to read except repeating these words. Most of, rest of, the rest of, some of, a few, a lot of, a little, a lot. These are the words you need to put. Dash number first. Dash, the people in Pakistan are hardworking. Most of the people in Pakistan are hardworking. Verb first में most of. Number second, only some of the workers are dishonest. Only some of, you can put these words which I have been explaining here on your book. तव्हां यानी कि ये word in time पंहिंजे book ते भी लिखी सघो था. In the example number third, dash, a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge, you need to put here a little. In the example number 4 or the blank number 4, I have heard a lot about a lot of जगह ते जेको a lot ईंदो. Sorry, I have heard a lot about you. A lot of about you न थींदो छाकाणि त ॿई preposition about and of जे करे a lot about you थींदो. I heard a lot about you but you don't know much about me. In the blank number 5, Salim, Hamid and Kareem stayed with Razia in hospital until dash us came back. Any sentence में दो the rest of. Blank number 6, I have chosen dash books for the library. I have chosen a few books for the library. In the blank number 7, dash में put करना है there is a little pieces of cake. In the blank number 8, in the blank number 7 में put करना है there is a lot of talk about civil defense these days. Sorry for the misputting the word. There is a lot of talk about civil defense these days. In the blank number 8, will you have a little piece of cake? छा तव्हां थोरो केक वठणु पसंदि कंदो? हे मतिलबु हिते खाइण. The next one slide. Non-textual exercise. What you have to do? Supply the full stop, comma, question mark, and sign of exclamation whatever necessary. जे कोई भी सैम्पल जी ज़रूरत आहे इन्ही ब्लैंक्स में असां जेको आहे हिते पुट कंदासीं. सॉरी इन्ही स्लाइड जे अंदरि. I bought some meat, sugar, milk and a pair of socks from the store. इन सेंटेंस में कामा पुट कई वई आहे मीट, शुगर एंड मिल्क जे दरमियान. छाकाणि त जॾहिं बि सीरीज़ ऑफ नाउन लॻंदा
ता हिकिड़ो वर्ड नाउन जेको आहे ख़ासि करे कंजक्शन खां सेपरेट कयो वेंदो, रेस्ट ऑफ खे कामा सां पाण सेपरेट कंदासीं. इन दी सेकेंड वन, वेयर डू यू propose to go from here, and you know that the condition of the sentence is interrogative and you need to put here the interrogative symbol. And the third number, I get up in the morning, take a bath, have breakfast and go to school. इन सेंटेंस में सीरीज ऑफ प्रेडिकेट लॻल है, यानी कि सब्जेक्ट खे छॾे करे सब्जेक्ट साॻियो ई आहे ऐं प्रेडिकेट यानी कि जुदा जुदा लॻल आहिनि. आई गेट अप इन द मॉर्निंग, टेक बाथ यानी कि मां सुबुह जो उथियुसि ऐं मां सुबुह जो उथंदो आहियां ऐं तड़ कंदो आहियां. हैव ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्तो बि कंदो आहियां. एंड गो टू स्कूल ऐं स्कूल वेंदो आहियां. इन सेंटेंस में हिते वरी सीरीज ऑफ प्रेडिकेट लॻनि था, इन जे करे कामा. हिते कामा लॻाईंदासीं, टेक अ बाथ, हैव ब्रेकफास्ट एंड हिते वरी एंड जेको सेपरेटेड कयो वियो आहे सेंटेंस खां, गो टू स्कूल. इन दी फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, वुड यू बी काइंड इनफ टू टेल मी वेयर द रोड लीड्स टू. यानी कि इन सेंटेंस दिस इज ऑल्सो द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आहे. छा तव्हां महिरबानी करे, छा तव्हां रहम करे मूंखे इहो ॿुधाईंदो त ही रोड केॾां वञे थी. मे गॉड sorry my god what have I done. हिन में एक्सक्लामेशन सिंबल जेकॾहिं तव्हां हिते ॾियणु था चाहियो त ॾेई सघो था, पोयां फुल स्टॉप ईंदी, या त वरी हिते कॉमा ॾेई करे हिते बि फुल स्टॉप ॾेई सघो था. मुंहिंजा ख़ुदा मां छा कयो आहे. The last one exercise, rearrangement, or rearrange the sentences by putting phrase in the correct form. And this exercise you need to do yourself on your note copy. The arrangement of the sentences you can see here. We meet on Sunday afternoon in the park always. We always meet on Sunday afternoon in the park. You can write like that sentence. तव्हां यानी कि इन सेंटेंस के इन तरीके सां लिखी सघो था. In the office I saw Jamil about an hour ago. इन सेंटेंस में इन द ऑफिस सेंटेंस जे फ्रंट में लगायो इट्स ओके, जेकॾहिं सेंटेंस जे लास्ट में लगायो इट्स ओके. आई सा जमील अबाउट एन आवर अगो इन द ऑफिस. सेंटेंस के यानी कि अॻिते पोइते इन खे करे सघो था. ये फ्रेज़िस जीअं लिखियल आहिनि उहे उहे लिखंदा आहियो. यानी कि कंप्लीट जेको फ्रेज़ आहे हिन जो खे कंहिं बि वर्ड खे टोड़ींदासीं न, बल्कि हिन खे अॻिते पोइते करे सघंदा. And the rest of the sentences you need to do on your notebook. Thank you very much for watching the video, and our lesson is going to be ended here.